a lot of people think that momentum is a strategy. So momentum is not a strategy. Strategy नहीं है, strategy में कैसे convert करते हैं, right? So strategy का जो formula है, that is nothing but time frame plus structural tendency. आई थिंक इंडिया का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि जितने नए लोग आए ये बुल मार्केट में आ गए हैं, तो आई एम वेरी वरीड फॉर देम। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट प्ले फॉर मल्टी बैगर। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं, जो भी नए इंसेंटिव्स हो सकते हैं या कुछ इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये भी कैटलिस्ट पे आ गए। वेलकम प्रभाकर टू दिस मेन वीडियो ऑफ फेस टू फेस। बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आपके बारे में जानता हूँ पहले से, इसलिए एक्साइटमेंट होना अनिवार्य है। तो चलिए जर्नी चालू करते हैं। आप 2000 करोड़ लोगों का मैनेज करते हैं, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और दूसरों का पैसा मैनेज करना, जैसे आपने कहा था कि बहुत ही अलग चीज़ है। अपना पैसा में आदमी नुकसान देख लेता है, एक्सपेरिमेंट कर लेता है, पर दूसरे का पैसा इज़ अ फिड्यूशियरी ड्यूटी कि आदमी बहुत ध्यान से करता है। तो आई एम श्योर आपने जो सिस्टम प्रोसेस बैठा रखे हैं उसका रिस्क बहुत अच्छा होगा। पैसा मैनेज कर रहे हैं तो रिटर्न भी अच्छा है। तो प्लीज़ टेक अस थ्रू दैट लवली जर्नी ऑफ लर्निंग विच यू हैव गार्नर्ड ओवर सो मेनी इयर्स। So let's share my screen. क्या मुझे ये पहला वर्ड इतना अच्छा लग रहा है, ये जेन। आपने जेड टू ए पूरा अभी कवर ही करेंगे लग रहा है। जेन पे आता हूँ मैं। जेन भी और साइंस भी थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश किया मैंने, क्योंकि मतलब आई स्ट्रांगली बिलीव इन व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो स्टार्ट करते हैं, बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। व्यूअर्स मतलब काफी डिस्क्लेमर देख चुके होंगे, बट कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है समझाना। बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, और मे बी स्ट्रैटेजीज। तो मतलब व्यूअर्स को पूरा का पूरा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही लेना है, क्योंकि अ, अगर बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली लॉस होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली लॉस होगा। तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी केयरफुल। जो जो हमारे लर्निंग्स हैं, जो आपके बाकी वीडियो भी हैं और जो ये वीडियो भी, आई एम श्योर द राइट स्पिरिट में लेना बहुत जरूरी है, कि जो 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 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके जर्नी में कैसे आप उसको एसिमुलेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो आपको इस वीडियो से निकालना है। कोई स्ट्रैटेजी, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता है, तो मैं बात करूंगा। बट या, सो दिस इज द डिस्क्लेमर, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एंड लेट्स बिगिन। एब्सोल्युटली। बस एक कुछ चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर में कि आज इनकी कंपनी है, हमारी कंपनी है, हम लोग सब सालों साल से सेबी रजिस्टर्ड है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ गलत काम करेंगे। करना तो दूर की बात है। तो आप इस चीज़ माइंड में रखिएगा कि भाई हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया है इस पूरे एक्सरसाइज में जो हम अभी करने वाले। और दूसरी बात है कि हमारे बीच में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, ना इन्होंने 1 रुपया दिया, न मैंने इनसे 1 रुपया मांगा। तो इट इज़ एब्सोल्युटली प्रो बोनो एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इनिशिएटिव फ्रॉम बोथ ऑफ अस, इंक्लूडिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो लगी हुई है आप सबको सही तरीके से सही एजुकेशन देने में। चले सर। एब्सोल्युटली। या सो जैसे मैंने कहा कि थोड़ा अलग चलेंगे, तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने इसको, प्रेजेंटेशन को। तो एक पार्ट में विल टॉक अबाउट सर्टेन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स दैट ड्राइव द मार्केट। इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग जनरली मार्केट में जो एंट्री करते हैं, जो एंट्री बैरियर जो होता है मार्केट में, वो बोलते हैं कि बहुत लो एंट्री बैरियर, कि कोई भी जिसके पास भी थोड़ा बहुत कैपिटल हो गया वो आ जाता है मार्केट में, राइट। तो फ्रेंड ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, पड़ोसी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, तो लोग मार्केट में आ जाते हैं, टिपिकली बुल मार्केट्स में आते हैं और अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर लेते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट रिलेटेड डिस्कशंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक सेटअप और स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे होते हैं। तो ये बात ऐसी हो गई कि डायरेक्टली बेसिक्स कवर किए बिना हम लोग डायरेक्टली मतलब स्पेशलाइजेशन पे चले जाते हैं। तो आप किसी भी फील्ड में देखेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग करेंगे या मेडिकल करेंगे या अपने फैमिली बिजनेस संभालते हैं, जो भी करेंगे, उसका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि आपको बेसिक्स फाउंडेशन समझने होते हैं, उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। अगर आप मेडिकल भी लेते हैं
तो +2 में आप बायोलॉजी लेते हैं, 5 साल MBBS करते हैं, 2 साल MD करते हैं, उसके बाद भी आप सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो हम्म, सिर्फ मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप डायरेक्टली सब सारे लेवल स्किप करके आप डायरेक्टली लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 पे चले जाएं। तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं। तो ये मैं थोड़ा बहुत एड्रेस करना चाहूंगा इनिशियल 50% ऑफ द प्रेजेंटेशन में। और नेक्स्ट में डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट अ स्ट्रैटेजी विच आई यूज विच इज बेस्ड ऑन अर्निंग सरप्राइज। थोड़ा बहुत इसके डिटेल में जाएंगे, काफी एग्जांपल्स भी लेंगे, और जी फिर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, विल बी हैप्पी टू आंसर। तो ये जो मैंने जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज मतलब कुछ ओरिजिनल मेरा पर्सनल आइडियाज नहीं है। आई हैव रेड जी इट फ्रॉम मेनी बुक्स, आई हैव रेड इट फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स, मेनी ट्रेडर्स। काफी कुछ पढ़ा है मैंने, काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, और जी उसको जैसे विवेक जी ने बोला कि इंजीनियर का दिमाग है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर में लाने की कोशिश की है। तो विद दैट बैकग्राउंड लेट अस गेट स्टार्टेड। जी प्रभाकर जी, आपने कुछ क्वेश्चन स्टॉक्स वगैरह का भी डिस्कशन करने वाले हैं, लाइक एज अ केस जी स्टडी, एज एन एग्जांपल्स, ठीक है? जी जी क्योंकि मेरे मन में भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे, बीच में बॉदर करूंगा। प्लस मैं भी कुछ स्टॉक्स मैंने खोल रखा अपने यहाँ पर स्टॉकेज, तो यहाँ से निकालूंगा और आपको श्योर भी बॉदर करूंगा कि इसमें आपको क्या लग रहा है। मोर फ्रॉम अ श्योर लर्निंग पर्सपेक्टिव, नो रिकमेंडेशन और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी। तो 3-4 फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। सो सबसे हम्म, पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है, जो विल टॉक अबाउट इन दिस स्लाइड। सो मार्क डगलस, आई थिंक उनका बुक था ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट साइकोलॉजी पे एक बहुत ही फेमस बुक है, सबको पढ़ना चाहिए। तो वो कहते हैं कि मार्केट्स आर लाइक अ रिवर ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मार्केट में पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम्म, राइट। और ये एक अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, बट 99% लोगों के लिए डिसएडवांटेज है। क्योंकि हम्म, होता क्या है कि जो एक नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है, ही इज एक्सपोज्ड टू सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ अप्रोचिंग द मार्केट, कि वो अटरली कंफ्यूज हो जाता है। उसको हम्म, समझ में नहीं आता है कि मैं मतलब ये 2 हफ्ता एक स्ट्रैटेजी करता है, फिर वो छोड़ देता है, फिर 2 हफ्ता कोई और स्ट्रैटेजी करता है। बट अगर आप एक स्टेप बैक लेंगे और अगर आप देखेंगे, द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स इन द मार्केट, दे आर पीपल हु हैव स्टक टू वन स्ट्रैटेजी और वन स्टाइल फॉर इयर्स एंड डिकेड्स, राइट। अगर आप वॉरेन बफेट को लेते हैं, तो इनिशियली 10-20 साल वैल्यू इन्वेस्टिंग किया, उसके बाद जो वो बाय गुड बिजनेसेस एट फेयर प्राइस टाइप ऑफ थिंग वो करते हैं। अगर आप पीटर लिंच को देखते हैं तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग किया। अगर आप ट्रेडिंग में आप लिवरमोर को देखते हैं तो वो एक टाइप के ब्रेकआउट ट्रेडर थे, राइट। आप हम्म, किसी भी, और अगर आप फेस टू फेस भी अगर आप जाके पीछे देखेंगे, काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट्स आए हैं, वो सब उन्होंने एक स्ट्रैटेजी को अपना काफी सारा टाइम दिया है, और इसीलिए हम्म, वो सक्सीड हुए हैं। सो द हम्म, फाउंडेशनल लेसन नंबर 1 है कि आपको एक रास्ता चुनना होगा, आपको एक पाथ चुनना होगा, एंड यू हम्म, हैव टू कमिट टू इट फॉर मल्टीपल ईयर्स। दैट हम्म, इज द ओनली वे यू कैन सक्सीड इन द मार्केट। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट मेकिंग मनी, टू बी कंसिस्टेंट, देन यू कैन नॉट बी अ डैबलर, जिसको बोलते हैं कि आप मतलब 5 चीजें कर रहे हैं, राइट। अगर हम्म, अगर आप कोई भी इन्वेस्टर पकड़ लीजिए, कोई भी इन्वेस्टिंग के बाहर भी आप चले जाए, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए आपको मेडिसिन के, जो एक सर्जन होता है वो एक स्पेशलिटी लेके आता है, राइट। ऐसा कोई, अगर आप कोई सर्जन रहेगा जो हार्ट का भी है, वो जो ऑर्थोपेडिक भी है, वो आंखों का भी है, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। नहीं तो जाएंगे, बरोबर। स्पेशलिटी इज मनी, फोकस इज मनी। तो हम्म, ये चीज जो रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती है, हम्म, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि मुझे एक पाथ पकड़ना है, उसमें कमिट करना है टाइम, और हम्म, उसको मुझे मास्टर करना है। एज हम्म, अ बिगिनर आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कि हम्म, आपने 5-6 डिफरेंट चीजें ट्राई की, ठीक है, एज अ बिगिनर बनते हैं। बट अगर आप सीरियस हो गए हैं मार्केट के बारे में, आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे मतलब अच्छा खासा कैपिटल डालना है, तो आपको एक पाथ और एक स्ट्रैटेजी, एक स्टाइल पकड़ना पड़ेगा, और उसी पे आपको एटलीस्ट फ्यू इयर्स इफ नॉट मोर आपको डेडिकेट करने पड़ेंगे। तो ये ओके। जो है वो पहला फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है जो इन्वेस्टर्स को समझना है। क्योंकि आपने इस पे समय इतना बिताया है, मुझे अच्छा लगा। मैं भी इस पे थोड़ा समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ कि जब हम चालू करते हैं तो वी आर वेरी जेनरिक। वी आर लाइक दैट 4 ईयर ओल्ड किड जिसके नए नए दांत आए हैं, तो हम सब कुछ खाना चाहते हैं। हम मिट्टी भी खाते हैं, हम लैपटॉप भी खा लेते हैं, हम सब कुछ चबाना चाहते हैं, बिकॉज उस समय टीथिंग होती है, वैसी क्रेविंग होती है उस चीज़ की। तो मार्केट में जब हम आते हैं, कितना समय लगता है
एक टिपिकल, अगर मैं आपको एक जस्ट एक गेस वर्क करवाऊँ आपसे, कि कितना टाइम बाद हमको वो रियलाइजेशन आती है कि अरे मैं तो इस चीज़ के लिए बनाऊँ तो मैं इसी पे ही लगा रहूँगा? रियलाइजेशन काफी लेट आती है, एंड इट इज रिग्रेटफुल। मतलब सबको लगता है कि अरे मुझे थोड़ा पहले मैं फोकस कर लिया होता तो बेटर होता। हाँ, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम। मतलब अगर कोई भी बुक में आप पढ़ेंगे आपको बात मतलब समझ में नहीं आएगी। आपको हाँ, वो, जैसे अपने बच्चों का एग्जांपल दो, बच्चे मतलब गिर के ही चलना सीखते हैं, तो हाँ, आपको गिरना हाँ, पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो हाँ, आइडियली आइडियली 2-3 साल तक आप डैबल कर सकते हैं। मतलब आपने 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 मार्केट में एंट्री मारा, आप कुछ ट्राई कर रहे हैं, आपने कुछ वीडियोस देखे, ये करा वो करा, दो हाँ, तीन साल बट जैसे मैंने बोला कि अगर आप सीरियस है मार्केट के बारे में, और हाँ, अगर आप सीरियस कैपिटल मार्केट में ला रहे हैं अपने अपने हिसाब से, सबका सीरियस कैपिटल अलग अलग होता है, तो हाँ, आपको डेफिनेटली इस डायरेक्शन में सोचना चालू करना चाहिए, क्योंकि 1 साल आपको फिर भी लग जाएगा। क्योंकि हाँ, वो बुरी आदत जाती नहीं है। मतलब आपको सेटअप पे आपको कोई और, आप देखोगे आप वो करना चाहोगे, कोई और कुछ करेगा आप वो करना चाहोगे। तो हाँ। जनरली 2 to 3 years फ्रॉम द टाइम यू स्टार्ट एंटरिंग द मार्केट, यू हैव टू बी इन अ पोजिशन कि मुझे एक रास्ता पकड़ना है और उस पर चलना है। तो इसका मतलब ये 2-3 साल जो हम कैपिटल लेके आए हैं, वो ऐसा कैपिटल लेके आए कि इट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग कॉस्ट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। तो हो सकता है 3 साल तक हमको जीरो ही पैसा बने, या हमारा पैसा लग भी सकता है ना, ये बिकॉज इट्स अ लर्निंग जर्नी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और पैसा जब लगता है तभी लर्निंग होती है, क्योंकि बुल बुल मार्केट में लर्निंग नहीं होती है। दैट इज। हाँ, तो अगर आप ये, पहले 3 साल बुल मार्केट मिले आपको, तो ऑल्दो यू फील हैप्पी बट यू विल हाँ, रिग्रेट इट लेटर। हाँ, ये आई थिंक इंडिया का ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि जितने नए लोग आए ये बुल मार्केट में आ गए हैं, तो आई एम वेरी वरीड फॉर देम। बट ठीक है, आई मीन खोने वाले लोग भी चाहिए, नहीं तो सब कमाएंगे तो कैसे चलेगा? और मेरे और आपके विवेक जी बोलने से भी कोई मतलब समझने नहीं वाला है, क्योंकि हाँ, इट इज अ पर्सनल जर्नी। उनको जी, हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कि ये लोग मतलब कॉन्जर्वेटिव हैं या ये लोग समझ नहीं रहे हैं। बट हम हाँ, लोग भी वो फेज से जा चुके हैं। व्हेन आई वाज यंग, आई यूज्ड टू थिंक सम पीपल आर फूल्स। आई यूज्ड टू रन वन स्टॉक पोर्टफोलियो। I one was quite stock portfolio. I was That's quite not a famous. portfolio. Yeah, it's not a portfolio. So I was मैंने ऐसे ऐसे experiments किए हैं। तो अच्छा, you know, अच्छा, so it's a part of the learning. It's a part of the failure. You have to appreciate that. So the जी, youngsters हैं, nothing to, you will get it. If you stay for a couple of cycles, जी, what you have to focus on is कि आपका जीरो ना हो जाए। हाँ, हाँ, आपका हाँ, लॉस तो होता है, बट लेवरेज लेके अगर आप मतलब फुलिश थिंग्स कर रहे हो, हाँ, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। यू हैव टू स्टिक अराउंड। इफ यू स्टिक या, अराउंड, मार्केट में डेफिनेटली पैसा बनेगा। बट वो एक चीज उनको टेक केयर करना है कि मैं जीरो ना हो जाऊं। फेयर इनफ, फेयर इनफ। आगे बढ़ते हैं। यस। सो पहला मैंने बोला कि ये एस्टेब्लिश कर लेना है कि मुझे एक रास्ता पकड़ना है। तो आप पूछेंगे इन्वेस्टर्स कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं ये क्या रास्ता पकड़ना है, राइट? तो उसका आंसर है टाइम फ्रेम। So time frame is a very important concept in markets. The clarity around your time frame decides everything. It decides your risk, it decides your reward, it decides your drawdown, it decides your strategy, it decides your stop loss, it decides everything. One word decides everything. जो टाइम फ्रेम है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे लोग काम करते हैं। सो कुछ लोग इंट्राडे पे काम करते हैं, मतलब दे विल बाय टुडे, सेल बाय आफ्टरनून, और दे विल बाय नाउ एंड सेल इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। उसको इंट्राडे बोलते हैं। कुछ लोग 1-2 दिन और 1 हफ्ते तक काम करते हैं, जिसको स्विंग बोलते हैं। कुछ लोग हफ्ते से लेकर महीने तक काम करते हैं, जिसको पोजिशनल बोलते हैं। फिर आता है इन्वेस्टिंग, जिसमें कुछ लोग ग्रोथ में है, कुछ लोग वैल्यू में है। ग्रोथ इन्वेस्टर्स में स्टिक अराउंड फॉर 3 to 5 years. वैल्यू इन्वेस्टर्स लुक फॉर द वैल्यू टू बी अनलॉक्ड, एटलीस्ट इन अ कपल ऑफ ईयर्स। कुछ लोग होते हैं जो मल्टी डेकेडल होते हैं, जैसे वॉरेन बफेट हैं, या सम ऑफ द लार्ज पेंशन फंड्स एंड फैमिली ऑफिसेस। दे थिंक इन टर्म्स ऑफ 10-20 years, देयर होराइजंस आर दैट बिग। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये डिसाइड करेगा कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। सो आपको ये टाइम फ्रेम क्लैरिटी बिल्ड करना है। तो टाइम फ्रेम किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन 4 main things, राइट? आपका पर्सनालिटी क्या है? व्हेन आई से पर्सनालिटी, सम पीपल दे कैन नॉट टेक इंट्राडे का जो स्ट्रेस होता है वो नहीं ले सकते, राइट? तो उनको मतलब वो समझ में नहीं आता है कि मैं अभी खरीदूं अभी बेच दूं लेवरेज लूं। तो पीपल कांट टेक दैट। So they gravitate towards a more slower, more passive approach, which is like investing. कुछ लोगों को थ्रिल चाहिए, दे एंजॉय द थ्रिल, दे कैनॉट बाय अ स्टॉक एंड वेट फॉर 5 years.
तो आपका पर्सनालिटी आपको समझना पड़ेगा कि मैं मतलब यू हैव टू नो योरसेल्फ, राइट? सो दैट इज द zen पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन which will keep coming again and again. The zen part of it is that you have to know yourself, you have to know your personality. जैसे मैंने बोला कि मुझे काफी आई वॉज वेरी वोराशियस रीडर, मैं काफी पढ़ता था, काफी बुक्स पढ़ता था, कॉमिक्स पढ़ता था, तो मुझे वो पढ़ने की आदत थी और एनालिटिकल थिंकिंग काफी मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग में मैं चला गया। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, तो आपको वो देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइम फ्रेम, कौन सा टाइम फ्रेम मुझे सूट करता है। दूसरी बात हुई टाइम की, कि आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। अगर आपको इंट्राडे में बहुत मजा आता है, आपको बहुत, आप उसमें थोड़ा स्किल सेट भी है आपका, डेवलप किया है आपने, बट अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, देन यू कैनॉट बी एन इंट्राडे ट्रेडर, एज सिंपल एज दैट। इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग नीड्स स्क्रीन टाइम। आपको स्क्रीन के आगे बैठ के पोजीशन को मैनेज करना है, तो आपको इंट्रिकेसी समझना पड़ेगा हर स्ट्रैटेजी का, कि क्या ये स्ट्रैटेजी मैं एफिशिएंटली रन कर सकता हूँ। मतलब कोई टाइम पास कर रहा है, हॉबी के लिए कर रहा है, वो अलग बात है, बट उनके लिए हम ये डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर आपके पास अगर काफी टाइम है, देन यू कैन डू प्रेटी मच एनीथिंग। यू कैन डू इंट्राडे, यू कैन डू स्विंग, इवन इन्वेस्टिंग यू कैन डू स्कटल बट, यू कैन मीट मैनेजमेंट्स। तो यू हैव टू फिगर आउट कि मैं कहाँ बैठता हूँ, मेरा टाइम कहाँ बैठता है। Third is, like I said, skill sets, right? So जैसे मैंने बोला कि some people are very good at risk taking, some people are very good at mathematics, they can calculate risk reward in a matter of seconds. Some people are very good at reading between the lines, कौन कॉल पढ़ रहे हो, annual report पढ़ रहे हो, you are able to figure out कि कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है और क्या हो सकता है। तो स्किल सेट्स मैटर करता है। और चौथा है ड्रॉडाउन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? सो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो इंट्राडे क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ओवरनाइट रिस्क पसंद नहीं है। जो लार्जेस्ट हेज फंड्स हैं, वो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे क्यों काम करते हैं? बिकॉज दे आर लिवरेज्ड, so they cannot afford drawdowns. So it's all connected, right? So it's that's why I'm saying these are foundational concepts, right? So drawdown is something, so आपको multi bagger बनाना है, so you cannot do it with a 5-10% drawdown. If you want to make a 100 bagger, you have to be ready to see a 50-60% drawdown. तो ये जो चार चीजें हैं, पर्सनालिटी, टाइम, स्किल सेट और ड्रॉडाउन, ये चारों आपको एनालाइज करके फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं किस टाइम फ्रेम पे मैं काम करना चाहता हूँ। तो इंट्राडे पे करूंगा, स्विंग पे करूंगा, या इन्वेस्टिंग करूंगा, या मल्टी डेकेडल करूंगा। तो ये क्लैरिटी इज द फर्स्ट स्टेप, टू रियली नोइंग कि मैं कौन सा स्ट्रैटेजी पकड़ूं। सो दिस इज Sure, अबाउट द टाइम फ्रेम। sure, sure. नेक्स्ट, द थर्ड कॉन्सेप्ट इज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे जाके वी विल ट्राई टू पुट देम टुगेदर एंड गिव यू अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क। So just to recap, the first concept was that you have to decide to follow one style, one strategy for the long term. You have to decide to stick to it. The second concept was that you have to understand what time frame are you comfortable with, because that will decide what strategy are you going to invest in, and what strategy can you really carry through over the long term. किस strategy को आप लेके मल्टीपल साइकिल्स में आप खेल सकते हो, उसके लिए टाइम फ्रेम डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, सो मार्केट में जो मूव्स होते हैं, दे आर ड्रिवन बाय पीपल, एंड पीपल का जो बिहेवियर है वो इनहेरेंटली प्रिडिक्टेबल है, राइट? सो आई थिंक प्रिडिक्टेबल इज द रॉन्ग वर्ड। व्हेन आई से प्रिडिक्टेबल, मोर और लेस, इट इज लाइक, इफ यू, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, you can be quite sure that that person will be happy. There may be one or two people, for whatever reason, they are unhappy, but the behavior of people is inherently, there are some patterns to them, right? So even in the market, because it's essentially people who are buying and selling, right? It's essentially a demand and supply that's happening between them. There are certain patterns which reoccur again and again, and these patterns have to be understood before you create any strategy. So I call it the science of the markets, or the physics of the markets, right? And why are they structural in nature? Because these patterns are seen not only in the Indian market, but they will be seen in the US market, they will be seen in the German market, they will be seen in the Chinese market. And they are seen across time frames. They will be seen on the daily time frame, on the intraday time frame, on the hourly time frame. They are seen across, right? So once you understand the structural tendency, then
you will be able to make much more sense of any strategy in the market, because all strategies essentially are built on the foundation of these structural tendencies. So Okay. I've listed a few of them. It's not an exhaustive list, but these are the most important ones. Which we will go through. So the first one is quite popular, right? It's momentum, right? So momentum is a structural tendency of the market. So Yeah. what? So a lot of people think that momentum is a strategy. So momentum is not a strategy. Strategy नहीं है. It is a tendency. इसके ऊपर आप काफी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं मोमेंटम की यूज करके. तो मोमेंटम में क्या होता है कि अगर स्टॉक एक महीना कोई स्टॉक ऊपर गया है, इट इज वेरी लाइकली दैट ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ ऑल्सो इट विल कंटिन्यू टू गो अप. दैट इज मोमेंटम. अगर कोई स्टॉक 3 महीना ऊपर गया तो अगले 3 महीने भी उसके जाने की प्रोबेबिलिटीज काफी हाई है. दैट इज मोमेंटम. सो स्पेसिफिकली short term momentum is trending. So that is the structural tendency. And long term momentum is mean reverting, which is the second point. Okay. जैसे बोलते हैं कि the trees can't go to skies, right? So ऐसा नहीं होता है कि प्राइस ओनली ऊपर जाएगा. और ये जो टेंडेंसी है सिर्फ प्राइस की नहीं है, ये टेंडेंसीज फंडामेंटल्स की भी है. हाँ. फंडामेंटली भी मोमेंटम वर्क करता है. अगर कोई कंपनी सडनली नेक्स्ट लेवल ऑफ अर्निंग्स पे चली जाती है, तो हाँ. typically you will see that next few quarters will continue that momentum. Similarly, if some earnings fall off a cliff, you will see that trend will continue for the next few quarters. Similarly, mean reversion, right? So mean reversion जो prices होते हैं on all time frames, mean reversion is a very very strong structural tendency. Even in fundamentally, even in margins we can see that. जो margins होते हैं बहुत ऊपर चले गए तो they will tend to mean revert, बहुत नीचे चले गए तो they will again tend to mean revert. So again, a very very strong structural tendency. Exhaustion is an extreme version of mean reversion, but again it is very very powerful and very very predictive in nature. Exhaustion में क्या होता है, especially in bear markets and all, we will see that the the breadth will completely die. मतलब कि जो number of stocks which are above let's say 50 EMA or 20 EMA will come in single digits. That time what has happened is all the sellers have sold and they have exhausted themselves, and even a small buying can take the market or that stock up. Similarly, on the other side of it, if you see a stock going up non-stop, which means that all the buying is exhausted, there will be a very violent reaction to the downside. It is again a tendency which is used by many traders across different time frames. Similarly, volatility contraction, I think Mark Minervini has made it very famous that when the volatility contracts, it is definite that it is going to trend on either side, very soon. So the more tighter the contraction, the more violent will be the breakout. And my favorite and the most important structural tendency is catalysts. Now, catalysts, any big move in the market is driven by catalysts. So I do this study every year, of the stocks which have done the best in that year, right? And if you go and study all of those stocks, right, which have performed the best, or the stocks which have performed the worst, there will always be a catalyst which would have started that run, or which would have led the stock to fall. Catalysts are typically three types, right? So one is news, right? Some news or event, or earnings, or some sort of a story or theme. So these are the three catalysts, right? Because essentially, like I said, stock markets are driven by people, and for us people, you need कि आपको कुछ कहानी चाहिए. You need a story. You need to. The brain wants to rationalize things. So any big move, जो move आता है, वो कैटलिस्ट के बिना आ ही नहीं सकता है. ऐसा हो सकता है कि आपको कैटलिस्ट समझ में नहीं आया हो या आपको पता ना हो, बट कोई भी बड़ा मूव आप निकाल के देख लीजिए मार्केट में, उसके पीछे एक रीसेंट एक कैटलिस्ट रहेगा, राइट? सो ये जो मैंने 5-6 यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, अंडरस्टैंडिंग दीज टेंडेंसीज डीपली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप कोई भी स्ट्रैटेजी निकाल के देख लो, चाहे आप फेस टू फेस के पुराने एपिसोड्स में जाके देख लो, they will be based on one of these 4 or 5 structural tendencies. ओके. अच्छा, ये गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज होते हैं, जो भी नए इंसेंटिव्स हो सकते हैं या कुछ इंपोर्ट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, ये भी कैटलिस्ट में आ गए? Absolutely, the very very strong catalysts. So any event, right? So anything like government policies, right? Management change, new product, earnings, significant earnings upgrades,
और सम एफडीए अप्रूवल और एफडीए का अगर कुछ मतलब नेगेटिव आया, तो ऑल द इवेंट्स आर कैटलिस्ट्स, and all of those catalysts are found either in the news. People think that news is not useful, but news is very useful. Corporate announcements में काफी ज्यादा alpha है, काफी ज्यादा edge है. People who go through corporate announcements can really unearth so many catalysts, right? So मैं बोलता हूँ कोई भी आप move देख लीजिए. आप recently BSE का जो move था, not the recent move but the earlier move, very clearly BSE was a stock which was a dividend yield stock. Nobody was interested in it, right? हाँ एंड जैसे ही वो सेंसेक्स का ऑप्शंस का स्टार्ट हुआ, हाँ बिकॉज वी वर इन दैट इंडस्ट्री अर्लियर, वी हाँ कुड फिगर इट आउट कि ये एक काफी बड़ा कैटलिस्ट है कि इसके अर्निंग्स कंप्लीटली चेंज हो सकते हैं, एंड वी हाँ एंटर्ड इट क्वाइट अर्ली. बट बट एवरी स्टॉक, गो एंड डू दिस एक्सरसाइज. आप ये एक्सरसाइज कीजिए, लास्ट एक महीने का ले लीजिए, 6 महीने का ले लीजिए, जस्ट स्टडी कि ये स्टॉक 6 महीने में 50%, 60%, 100% क्यों गया है. उसके पीछे आपको मिलेगा कि उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट रहेगा. fair सो enough. सो दीज आर द 4 or 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टेंडेंसीज. अभी इसको हम स्ट्रैटेजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट? सो स्ट्रैटेजी का जो फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट टाइम फ्रेम प्लस स्ट्रक्चरल टेंडेंसी. अगर आप अपना टाइम फ्रेम और स्ट्रक्चरल टेंडेंसी को मिला देते हैं, तो आपकी हम्म, स्ट्रैटेजी बन जाती है. ओके. तो सम एग्जांपल्स, राइट? सो ऑप्शन राइटिंग. तो ऑप्शन राइटिंग क्या है? बेसिकली आपका टाइम फ्रेम इंट्राडे है, और स्ट्रक्चरल टेंडेंसी जो आप कर रहे हो मीन रिवर्शन है. तो हम्म, बेसिकली आप एक्सपायरी के दिन जनरली होता है ये ऑप्शन राइटिंग, मोस्टली. और आप क्या बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस एक है या कोई सपोर्ट, अगर आपने कॉल शॉर्ट किया है तो आप बोल रहे हैं कि उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, सो यू आर बेटिंग ऑन मीन रिवर्शन. सिमिलरली इफ यू शॉर्टेड द पुट, यू आर सेइंग दैट वो सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा, वहां से वो ऊपर आ जाएगा. तो बेसिकली योर ऑप्शन राइटिंग इज नथिंग बट इंट्राडे टाइम फ्रेम प्लस मीन रिवर्शन. तो सिमिलरली स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं, उसमें आपका मे बी एक हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम रहेगा. But हम्म, essentially, what are you betting on? Most of the successful swing trading is based on continuation patterns, which is हम्म, nothing but आपका एक momentum आता है, और then there is a volatility contraction, right? हम्म, So you put momentum and volatility contraction together and put that with a time frame of a week or couple of weeks, you've got swing trading, right? हाँ Similarly, positional trading में क्या होता है? You typically have some momentum and like I said, you have a catalyst. For any हाँ big move, you will need a catalyst. कैटलिस्ट के बिना आपको बिग मूव नहीं आएगा. और अगर आप कैटलिस्ट को समझे बिना बिग मूव में पार्टिसिपेट करेंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक मोस्ट ऑफ इट. मार्केट विल शेक यू आउट, हम्म, राइट? वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? आप 1-2 साल का टाइम फ्रेम रख के चलते हैं जनरली, but you're betting on mean reversion. But mean reversion of what? Mean reversion of typically of margins. Mean हम्म, reversion of margins or mean reversion of valuations, right? Growth investing क्या होता है? Slightly longer time frame, momentum in earnings plus catalysts, right? You're looking for momentum. So any strategy can be broken down into these fragments. And ये अगर आप समझ गए कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लीजिए, उसका टाइम फ्रेम क्या है और वो किस स्ट्रक्चरल टेंडेंसी पे काम करता है, अगर आप ये फाउंडेशनल चीज समझ गए, तो स्ट्रैटेजी की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दैट विल गो अप मल्टीपल ऑर्बिट्स, राइट? हम्म, तो ये मैंने थोड़े एग्जांपल्स दिए, बट आप अपने स्ट्रैटेजी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम का और हर एक स्ट्रक्चरल टेंडेंसी का अलग अलग स्पेसिफिक ये होता है, क्या बिहेवियर होता है. करेक्ट. तो तो अगर आप इंट्राडे पे काम कर रहे हैं, तो जो इंट्राडे वाले हैं उनका जो वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, द वे दे आर ऑर्गेनाइज्ड, द वे, द टूल्स दैट दे यूज, द स्कैन्स दैट दे यूज, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम somebody who is doing वैल्यू इन्वेस्टमेंट और somebody हम्म, who is doing ग्रोथ इन्वेस्टिंग. तो हम्म, सो इंट्राडे वाले जो हैं उनका अलग वे ऑफ अप्रोचिंग द मार्केट होगा. और अगर आप मीन रिवर्शन कर रहे हैं, तो मीन रिवर्शन के अंदर काफी सारे नुआंसेस होंगे. हम्म, अगर आपको मीन रिवर्शन का मास्टर बनना है, तो काफी लोग मीन रिवर्शन में स्ट्रेटजीज बनते हैं. सो पुल हम्म, बैक ट्रेडिंग करते हैं लोग. हम्म, जैसे मैंने बोला कि एग्जॉशन इज अ फॉर्म ऑफ मीन रिवर्शन. So if a stock has really been oversold, they will look for a bounce and try to be play for the next 2-3 days. So similarly, हर एक स्ट्रैटेजी का अगर आपने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया, तो आपको जो उसके जो नुआंसेस हैं, उसके जो स्पेसिफिक बिहेवियर हैं, वो समझने में काफी आसानी होगी, हम्म, राइट? तो और सो आपने स्ट्रैटेजी बना ली अभी, राइट? सो क्लैरिटी ऑफ टाइम फ्रेम आ गया आपको, क्लैरिटी ऑफ स्ट्रक्चरल टेंडेंसी आ गया, आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली. अब स्ट्रैटेजी में आपको क्लियरली क्या डिफाइन करना है. सो आपका जो बाइंग क्राइटेरिया है वो क्या है,
आपका साइजिंग क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है और आपका टेक प्रॉफिट क्या है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर समझते हैं कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं मेरा स्टॉप लॉस नहीं होगा करके, बट इन्वेस्टर का एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस होता है, बिकॉज दैट इज देयर एलोकेशन। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, वो 15%, 20%, 10% एक स्टॉक में एलोकेट नहीं करते हैं। दे विल एलोकेट 1.5, 2% और 3%। तो अगर स्टॉक 50% भी गिरता है, तो ऑन द पोर्टफोलियो यू आर लूजिंग 0.5%, लेट्स से इफ यू आर 1% एलोकेटेड। So the stop loss for an investor also is there, but the stop loss is in the form of allocation, right? So आपका जो strategy है, you have to have that clarity कि आप क्या कब बाई करेंगे, साइजिंग आपका कैसे होगा, स्टॉप लॉस आपका कैसे होगा और टेक प्रॉफिट आपका कैसे होगा। एंड ऑल ऑफ दोज 4 फैक्टर्स विल डिपेंड ऑन आपका टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यू कैनॉट प्ले फॉर मल्टी बैगर। तो आपका टेक प्रॉफिट कैनॉट बी 100%, 200%, 300%, राइट। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका टेक प्रॉफिट, इट डजंट मेक सेंस फॉर यू टू टेक अ ड्रॉ डाउन ऑफ 30-40% एंड हैव अ टेक प्रॉफिट ऑफ 30-40%। यू हैव टू हैव अ मच हायर रिस्क रिवॉर्ड। तो ये टाइम फ्रेम और स्ट्रक्चरल टेंडेंसी एंड दीज कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ sizing, stop loss, take profit, if you put them together, you will have a much clearer understanding कि मैं अपने स्ट्रैटेजी में कौन सा स्ट्रैटेजी पिक करूं और मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों छोटे प्रॉफिट्स ले रहा हूं या मैं क्यों स्टॉप लॉस यहाँ पे डालता हूँ, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए आपको जो टाइम फ्रेम की जो बात है वो समझनी पड़ेगी। ओके, आप कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके भी ये समझाइएगा ना, श्योर श्योर। स्टॉक्स तो के एग्जांपल, चार्ट लेके एग्जांपल, तो उससे एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। सो जिस मैंने आपको एग्जांपल दिया, बीएससी का एग्जांपल दिया मैंने कि कैसे कैटलिस्ट कैटलिस्ट कम इनटू प्ले। आपको मीन रिवर्सन का एग्जांपल मैं रिसेंटली देता हूँ, वाज द चाइनीज मार्केट, राइट। द चाइनीज मार्केट वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एग्जॉशन एंड मीन रिवर्शन, राइट। इतनी उसका बुरा हाल था, एंड ऑन द एज सून एज द mean reversion started, there was a trade there, or there was a there was an investment there, like potentially, whereby because everybody who had to exit the Chinese market had exited. People, FIIs, people were completely out of it, and suddenly वो क्यों वो turn आया, right? Again, there was a catalyst. What was the catalyst? The catalyst was the stimulus. As soon as the stimulus came, the mean reversion came into play, and the market from 52-week low, within a week it went to a 52-week high, right? So similarly, if I have to show you, बट हर स्ट्रेटजी का रिस्क रिवॉर्ड बहुत डिफरेंट है। जैसे मीन रिवर्सल है तो उसमें आपने लिया, जरूरी था ना आपका लिया हुआ बहुत सही घूम जाएगा, हो सकता है आपको और परेशान करे और नीचे जाए और नीचे जाए। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको टाइम फ्रेम समझना जरूरी है। तो ये चाइनीज मार्केट का मैंने एग्जांपल दिया, वो मल्टीपल वेज में यू कैन प्ले। तो जो इन्वेस्टर है, वो मैंने जैसे आपको बोला, वो क्या करेगा, वो अपने पोर्टफोलियो का 1%, 2% डाल देगा और बोलेगा ठीक है मैं वेट करता हूँ, यहाँ से 50% तो गिरेगा नहीं, गिर भी गया तो आई कैन मैनेज इट इफ आई एम पुटिंग 2%। नाउ देयर माइट बी सम hedge funds which are leveraged, right? So they cannot operate with that big a drawdown because they are playing for a very short time frame, maybe a few days they are playing for, right? So they will have a different stop loss, they will have a different take profit, a different stop loss. So that is exactly what I'm saying कि अगर आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी पता है और आपको आपका टाइम फ्रेम नहीं पता है, देन यू विल कंप्लीटली गेट लॉस्ट, राइट। अगर आपको टाइम फ्रेम पता है तो आपको पता चलेगा कि मैं ये नेक्स्ट 1 ईयर के लिए खेलने वाला हूँ, which means that I have to be open to a higher drawdown, which means that my allocation has to be lower. If somebody is playing it for 2-3 days, then they can lever it up also, but have the right stop losses and play for just for that bounce. So that's why I said, markets are a river of opportunity. There are many ways to play any given event, right? So most of the intraday traders, right, successful intraday traders, whether in India or the US, India में तो आजकल सिर्फ options ही चलता है, but in the US, most of the intraday traders, right, they focus on stocks which are in play, right? So the same stocks on which investors are making big money, like Nvidia or Meta or Amazon, right?
they are the same stocks on which the intraday guys play, but with a completely different strategy, right? Because Nvidia is liquid, Nvidia is, a lot of funds own it, but the same stock, same underlying, everything is the same, but the strategy is completely different because the time frame is different, right? सही So, so this idea that breaking your strategy into these two components of time frame and structural tendency will will really up your understanding of your entire strategy. पूरी strategy आप अभी शायद blindly कर रहे हैं, but अगर आप इस तरह से break down करेंगे किसी भी strategy को, तो आपकी जो strategy की जो समझ है वो it will really go up multiple levels. सही है So let's start with the second part of the presentation, which is a particular strategy that I follow, which is based on, like I said, one of the types of catalysts, which is earnings, right? जी So जैसे मैंने बोला कि I do this study of stocks which make big moves, right? And so if you do this study, then typically you will find two types of scenarios, right? One, stocks which make big moves typically have breakout earnings, in when the move started or around the time the move started, and that breakout earnings, then if it continues for multiple quarters, then the stock makes a big move and continues like that for several quarters, ओके right? That is one. Second thing you will find is stories or themes, right? Whereby the earnings is actually not there, but some event has happened in the market which tells the market that the earnings are going to materially improve over the next few quarters. Whether they improve or not is secondary. But ओके just if the market comes to know that something good is happening here, then the market will re-rate those stocks. So any big move can be divided into these two categories. ओके I am going to focus only on the categories where the demonstrated earnings breakout is there. I don't want to go into the second part, which is stories or themes or those kind of things, uh, because especially when you're managing public money, it's all the more important that you invest on tangible information and not on something that may or may not narratives happen. Narratives, narratives yeah, narratives. तो आप Although टीवी देखते नहीं है इसका मतलब आप टीवी बिल्कुल भी नहीं देखते, टीवी है ही नहीं हमारे ऑफिस में, नॉट एट क्योंकि ऑल, नॉट एट ऑल. that's the den of narratives that is Yeah, supposed to yeah, be like that yes, yes. So just before we start, so whatever we covered earlier, right? So if I have to break my own strategy into time frame and structural tendency, right? So my time frame is about anywhere between 2 to 8 quarters, right? And how I came upon this is, like I said, in my study, in my research, I found that the big moves or the re-rating phase is typically 8 quarters, which is about 2 years. तो 2 साल में जो होना है वो हो जाता है. There are exceptions to this. There are certain stocks which go beyond this, right? Which is obviously an edge case. But on an average, most of the action happens between 2 to 8 quarters, and that is why I have kind of fixated on this time frame. And so my time frame is about 6 months to 2 years essentially. And my the tendency on which my strategy is based, like I said, is catalyst based. And within that catalyst base, I am looking for fundamental momentum, which basically means that I'm looking for breakout earnings in stocks, and I'm looking for mean reversion in fundamentals, which means that I'm also interested in turnaround candidates. So I am interested in growth candidates and I'm interested in turnaround candidates. okay Both of these can provide us, big moves. So these are and of course, price momentum is actually a result of this. When this plays out, what you get as an outcome or output is the price momentum. So आपका time frame है 2 to 6 quarters or 2 to 8 quarters, or we are doing this catalyst based investing. Specifically, we are focused on the earnings part of it, sure right? So what is this earnings explosion all about, right? So basically, what I'm looking for, is whenever there is an earnings print that is significantly better than what the stock has done over the last 8 to 12 quarters, right? I get interested, right? So if there's an earnings print which is so good, and it is a surprise, right? Because nobody was expecting this. So there are two aspects of it.
One is there has to be a surprisingly good earnings print. काफी अच्छा जो 8 से 12 क्वार्टर्स में जो स्टॉक ने टॉप लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखा है, वो अभी वो स्टॉक सडनली देख रहा है। और इससे पहले वो स्टॉक नेग्लेक्टेड था। दे आर द टू कोर एलिमेंट्स, बिकॉज आई डोंट वांट, इफ द स्टॉक इज ऑलरेडी बीन गोइंग अप बिफोर द अर्निंग सिग्निफिकेंटली, उसका मतलब ये है कि वो सरप्राइज नहीं है, वो मार्केट को पता था, किसी को पता था, कुछ तो था, राइट? So this is the core thing I'm looking for. We'll go deeper into this, and then maybe we'll study some examples. So I mean, just two quick examples. मैंने बोला कि Shakti pumps and BSE we already discussed, which was more of an anticipation in earnings. But Shakti pumps में जो आया वो एक earnings surprise था. I have that stock in my list, so I will take you through that. So let's focus on what conditions do we look for a stocks to qualify. Right, so काफी Okay. बड़ा slide है, but I'll just quickly run you through. So like I said, I want to look at a big jump in revenue, operating profit, and EPS over the last several quarters. To quantify it, over the last 8 to 12 quarters, I want to see a significant jump in revenue. I want to see that the margin is not at the higher end of the range, right? So if you study what margins has this company done, right, in the past. So if this quarter's margin is significantly higher than that, then that is a bit of a question mark, because that means that either something new is happening here, which you have to evaluate, or it means that the margin is likely to mean revert, right? So this is Okay. just a checkpoint. This is just a checkpoint that why the margin should not be too high, because that opens you to the risk of margins mean reverting, right? Okay. And this has to be the first or second quarter of improved earnings, right? A lot of Okay. times what happens is the first quarter for a lot of mid and small cap stocks, the market doesn't trust them. So if the management is trustworthy, then the first quarter is good enough. But sometimes if the management is not trustworthy, after the first quarter of very good earnings, the market does not re-rate them. It waits for the second quarter. But anything beyond third quarter is stale. So you have to be in the first or the second quarter. Okay. Once you found a stock with these characteristics, right, like a significantly big jump in top line, operating profit, EPS, right, then you have to, there are two ways to look at it, right? So if you are an expert and you have conviction that this will work, you can just go out and allocate to it. But if you are a novice who is not that great at analyzing how the market will take this, then you have to look. You can use the price action to kind of get a sense of what might happen, right? The price action also is very different in bull and bear markets. If it's a bull market and your analysis is right, the stock will gap up with huge volume and the stock will just take off, right? If it is that is a sign that that your analysis is correct and the stock is likely to get re-rated. If it is a bear market, the behavior will be very different. The reaction, it will still open gap up, but the gap may fade. The stock may come back into the range, and they spend some time there. And then when the market environment improves, it may take off. Or even in a bear market, if the situation is so good, then even in a bear market, the stock may continue to rally. But the hit rate of the strategy in bull market can be 70-80% or more. Last year it was probably more than 90%. But hit rate of the strategy in a bear market is maybe about 50-60% or even less. So Okay. you have to understand that. It's very important to understand that and not get frustrated, because in a bear and a choppy market, the strategy will do what it has to do, which is it will not really take off, right? Like I said, if it works, then a very high volume significantly improves your probability of success. Now, there are some other indicators which we use to get to improve the quality of what we pick. Right. One of the things is, if the improvement is earnings is happening across the sector and not Okay. just one specific company, Okay. then that means that you've probably got it right. That this is a major sectoral change, and the stock can actually get re-rated. The Okay. other thing is, if you have a choice between a smaller company and a bigger company, always pick a smaller company, because smaller companies will make bigger moves and a bigger company will relatively make a smaller move. Okay. If it is an IPO, right, and it has corrected, and then it comes out with very good numbers, right? Because typically the IPO numbers will be very good before the IPO comes.
right? Yeah. Now, typically what happens is after that, 1 or 2 quarters go by, and the numbers are not so great compared to the pre-IPO quarter. The stock Yeah. corrects, and Yeah. then for whatever reason, if there's an improvement in the earnings, then IPOs and smaller companies are your best bets, because typically IPOs do not have much ownership, right? A lot of funds don't own them yet. So there is a lot of buying power that can come and support an IPO if the earnings, are ready to take off, right? So Okay. we've seen this in a lot of stocks like Varun Beverages. So many examples are there where the post IPO there was not much of a movement, but once the earnings started improving, the stock really took off. The Zomato is a classic example. Zomato is a classic example. Absolutely, absolutely, Mm. right? So and again, for the adventurous, जिनको थोड़ा adventure करना है, low float is another angle to it, right? Of course, for larger allocations and all, we cannot do that. But as a retail investor, if you're interested, then if you have to choose between very high float and a low float, a lower float stock will obviously make a much bigger move. The earnings are good compared to a much higher float. So a smaller company, an IPO and lower float, these are like sort of a cheat codes type for you to get a much higher return. So Okay. once you bought it, right? So what do you have to do? So the question is, once you identified it, right? Once you identified it, you have to immediately buy it. You have to buy it as soon as the market opens, because these stocks make very quickly 20-30% moves, right? So if you are Yeah. late to the party, then you are out. Uh, Allocation, is very important. I do it with a 3 to 5% allocation, because like I said, I typically operate in the mid and small cap space. And I don't want any mistakes to hurt my portfolio beyond the point, right? That एक is one. प्रभाकर, वन पॉइंट इसमें, सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल, कि जनरली क्या होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो नेक्स्ट डे स्टॉक गिरता है जनरली. हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन कि पहला 30 मिनट लिया, देखा स्टॉक ही गिर गया उसके बाद? Correct. No, that is where, like I said, market environment matters. काफी हाँ. टाइम अगर मार्केट, जैसे अभी का मार्केट एनवायरनमेंट है, काफी चॉपी है. लास्ट द ब्रेथ इज नॉट सो ग्रेट राइट नाउ. द मार्केट इज चॉपी. तो लास्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स थे, और वैल्यूएशन आल्सो वर क्वाइट because the good results were coming for the last many quarters. So like I said, it's very important, that concept, that it has to be a fresh, it has to be a fresh earnings breakout. If something has been giving very good earnings for the last 3, 4, 5 quarters, then it is no longer, it no longer qualifies, right? But it does happen. Just I'll give you an example. I think it was FDC gave very good, I think decent results, not very good results, but very good, अच्छे number आए थे. Same thing happened, what you said. Stock went up, it opened up, then it faded, then it fell about 10-12%. And after a few days, it took off and hit a 50-day high. So that happens, right? So that happens. And that is why you can't, आपको stop loss का business यहाँ पे नहीं ला सकते. You cannot bring the stop loss business here, because the market will shake you out of the position. So that is why I use a 3 to 5% allocation. That itself, like I explained earlier, मेरा stop loss is my allocation. So I am using a 3 to 5% allocation. And diversification, मतलब मुझे लगता है कि जो बोलते हैं कि free lunch है, इट इज एब्सोल्युटली अ फ्री लंच. क्योंकि होता क्या है कि मेरे एक्सपीरियंस में, जो स्टॉक मुझे लगता है कि सबसे अच्छा करेगा, वो कुछ खास नहीं करता है, और जो मुझे लगता है कि कुछ खास नहीं करेगा, वो सबसे अच्छा करता है. तो डाइवर्सिफिकेशन अलाउज यू टू बाय मेनी डिफरेंट स्टॉक्स, राइट? ऑफ कोर्स उसका एक लिमिट होना चाहिए. सो आई टिपिकली स्टिक टू अबाउट 25 to 35 स्टॉक्स, राइट? But it allows me to pick. If I'm concentrated, then I am saying that I am smarter than the market. तो मुझे पता है कि यही 5 स्टॉक जाने वाले हैं, राइट? पर डाइवर्सिफिकेशन में आपको एक ऑप्शनैलिटी मिलता है कि आप यू कैन पिक मोर कैंडिडेट्स, एंड टिपिकली द मार्केट सरप्राइज यू, कि जो आप सोचते नहीं हो, बट आपके पैटर्न में वो बैठा है, तो आपने उसको खरीदा है, एंड दैट स्टॉक विल रियली टेक ऑफ एंड बी वन ऑफ योर बिगेस्ट विनर्स, राइट? एक एग्जांपल लेते हैं, जो आप कह रहे हैं ये अर्निंग सरप्राइज वाला, कि आपने जैसे से कहा, मैंने शक्ति पंप भी सामने खोल रखा है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि ये दिसंबर 23 क्वार्टर, अचानक से इसका सेल्स हो गया 495 करोड़, जो कि उसके पहले का क्वार्टर था 152 करोड़. सो लाइक यू राइटली सेड कि यहाँ पे वो ब्रेकआउट क्वार्टर था, राइट? 496 का टॉप लाइन आया significantly. The stock was not at all growing, suddenly started growing at 58%.
ऑब्वियसली टॉप लाइन भी आया, राइट? एंड व्हेन वाज दिस रिजल्ट केम ऑन 25th January 2024, राइट? ओके। तो 25th January 2024 का अगर आप प्राइस लेंगे, 25th का नहीं, आपको रिजल्ट बाद में आओ, आपने यहाँ पे ऊपर लिया होगा, हाँ लेट्स से 31st को लिया आपने 1400 हाँ पे। हाँ हाँ। तो 1400 पे आपने लिया, अभी कितने पे है? 4500 पे, सो हाँ, थ्री बट टाइम्स उस प्राइस। समय उस समय तो स्टॉक देखिए लेने के बाद गिर गया। मैं उसके चार्ट पे जाता हूँ। आपको यहीं पर ही दिख जाएगा, आप उसी में देखो अच्छा, नीचे। हाँ, ये ब्लू लाइन इज। नो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो दैट इज वो मैं आपको पॉइंट बताने वाला था कि अभी अभी आपने बाइंग कर लिया है, होल्ड होल्ड कैसे करना है? तो आपको, हाँ आपने बाइंग किस बेसिस पे किया है? आपने बाइंग किया है कि आज का ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स आया है, तो हाँ। आपको अगले क्वार्टर तक उसको वेट करना ही है। यू हैव ओ, यू हैव दिस इज नॉट ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नहीं है। तो अच्छा आपको अच्छा, वेट तो कर आपको, बेसिकली पहला हाँ क्वार्टर जब रिजल्ट आया, हाँ, अब आपको तो नेक्स्ट क्वार्टर भी देखना पड़ेगा एज अ वेरिफिकेशन बिफोर यू सेल नहीं, इट, राइट? बिफोर यू डिसाइड टू कीप इट और सेल इट। इसीलिए मैंने बोला है कि मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 2 to 8 क्वार्टर्स है। आज समझ तो गया मैं। हाँ, सो अगले क्वार्टर में भी इसने कंटिन्यू किया। और हाँ। टिपिकली जो आपका बड़ा पैसा बनता है वो सेकंड क्वार्टर के बाद ही बनता है। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, हम्म। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया था कि स्टॉक मार्केट जो मिड और स्मॉल कैप है, स्पेशली शक्ति फर्म्स का कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतना कुछ ए क्लास नहीं है, राइट? हाँ तो मार्केट उसको ट्रस्ट नहीं करता है, तो एक बार उसका हाँ थोड़ा बहुत री रेटिंग किया, उसके हाँ बाद स्टॉक वहीं पे था। जब हाँ। सेकंड क्वार्टर का जब अर्निंग आया, राइट, तो सेकंड क्वार्टर का जब अर्निंग आया, जो कहाँ तो गया जो बेसिकली वो, मार्च क्वार्टर का जो अर्निंग आया होगा वो अप्रैल या मई में आया होगा, करेक्ट? हाँ अप्रैल या मई, लेट्स से मई में आया होगा, राइट? तो आप मई का हाँ पकड़िए। तो वहां से उसका फिर वो री रेटिंग चालू हुआ। हाँ, बरोबर है, बरोबर है। और इसमें नाउ आई कैन अंडरस्टैंड। एक और इसमें नुआंस होता है कि अगर आप देखेंगे, काफी टाइम क्या होता है ना कि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक विल गो इनटू अ करेक्शन, या और और अ पुल बैक। या। बट जो अगले क्वार्टर का रिजल्ट है उसके आने से पहले एक रैली लेता है वो। हाँ, इट एक्सपेक्टेशन विल वैल्यू। हाँ, बरोबर। इट विल बी एन एक्सपेक्टेशन रैली, इट विल प्राइस हाँ। दैट इन, एंड दैट इज हम्म एग्जैक्टली व्हाट प्रोबेबली हैपेंड हियर, कि रिजल्ट हम्म। से पहले उसने एक थोड़ा बहुत रैली लिया, एंड देन पोस्ट द रिजल्ट केम द रियल री रेटिंग हैपेंड। सही है, नाउ आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। या, तो let me go back to the presentation. Yeah, so that is what I mentioned here. So when to continue to hold, right? So as long as no news flow comes inter-quarter that poses a risk to the earnings of the company, we should hold them, right? तो अभी केमिकल कंपनी है, अगर आपने बाई किया है और आपको कुछ चाइना का न्यूज आ गया, कुछ आ गया इंटर क्वार्टर, तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, बट अदरवाइज यू हैव टू होल्ड ऑन टिल द नेक्स्ट क्वार्टर, एंड यू कैन डिसाइड ओनली आफ्टर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स। तो ये क्लैरिटी मैंने जैसे बोला कि होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं earnings, the key thing here is earnings. So I या have to focus on earnings. I cannot focus on other things. या I cannot या focus on price. I cannot focus. So मैंने earnings पे लिया है, मैं earnings पे ही बेचूंगा, या। right? So that is what it is. So when do you sell, right? तो ये जो रिजल्ट मोमेंटम जो बोलता हूँ मैं, से ग्रोथ चालू हुआ शक्ति पंप्स का, अब जब ये 30 40 50% पे ग्रो कर रहा है, अभी आगे जाके क्या होगा? आइदर टू थिंग्स विल हैपन, राइट? तो फोर्थ और फिफ्थ क्वार्टर ऑफ गुड रिजल्ट्स, आई विल स्टार्ट ट्रिमिंग इट, क्योंकि फिफ्थ क्वार्टर में क्या होता है ना, द बेस बिकम्स हायर। जो आपका या फर्स्ट क्वार्टर अच्छा आया था, दैट विल बी योर कंपैरेटिव क्वार्टर फॉर द फिफ्थ क्वार्टर। या तो आपका जो सो वहां से थोड़ा बहुत री रेटिंग, और मार्केट क्या करता है ना, इफ द रिजल्ट्स कंटिन्यू टू बी गुड, देन जब आप फिफ्थ क्वार्टर में होंगे, वो ऑलरेडी एट क्वार्टर का प्राइस कर चुका होगा, बिकॉज मार्केट डजेंट वेट, राइट? सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रिमिंग अराउंड फोर्थ और फिफ्थ क्वार्टर। The other thing is, if the results are so good and the margins are so high that it's hard to significantly improve on these numbers, right? Then you have to, look at trimming them, right? So examples, like Fine Organics or Tata, let's see. या। Uh, so I remember Fine Organics came up with very good margins somewhere, and that was the actually the top. Yeah. I think it was this quarter. आप पैट मार्जिन की बात कर रहे हैं? मार्जिन मतलब Operating profit. I always look at operating profit margin, right? एबिटा मार्जिन इसका आया था मार्च क्वार्टर। मार्च क्वार्टर। हाँ। उसके बाद जून में इसका थोड़ा इंप्रूव हुआ था, 29% हुआ था। उसके जू- बाद
क्वार्टर में, अच्छा हाँ सॉरी, ये आप मार्जिन की बात करें, बरोबर है। मार्च हाँ में हाँ पीक हुआ 26, फिर जून में हाँ आया पर 25.5% मार्जिन। हाँ। तो जून में जब आया तो इसका रिजल्ट आपको आया होगा अराउंड जून जुलाई, राइट? तो जी। आप देखिए जून के बाद वो जून जुलाई यहाँ पर रिजल्ट आया, वो ऊपर गया, बट हम्म राइट इट बट it was the peak margin and it just came back from there, हम्म। right? So you have to recognize that that this is peak margin behavior. इज 14% इट, का मार्जिन था। अच्छा आप जून 23 की बात कर रहे हैं, ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके तो ओके। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टाटा एलेक्सी का। जून, एक्चुअली मार्जिन जो टॉप में हुआ था 34% मार्जिन हुआ था मार्च 23 में, और जून में टाटा उसने एक्चुअली में मिस किया था। ये फाइन ऑर्गेनिक, टाटा एलेक्सी का देख लेते हैं। टाटा एलेक्सी में अगर आप देखेंगे तो इट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द मार्जिन्स, राइट? 30 जून 2022 में अगर आप देखेंगे तो 33% था, और सडनली इसका मार्जिन अब जैसे कम आया उसका नेक्स्ट क्वार्टर, राइट? सो जून 2022, if you go and see, let me just make it 3 years. ये रिजल्ट कब आया था? सितंबर में इसका जो मार्जिन कम हुआ था, राइट? तो ये देखिए, तो बिफोर द सितंबर रिजल्ट्स द मार्केट फिगर्ड आउट कि ये मार्जिन सस्टेन नहीं होने वाला, एंड द फॉल ऑलरेडी स्टार्टेड। ये हाँ सितंबर बिगिनिंग बिगिनिंग में होना, अगस्त में होना, हाँ। राइट? सो मार्जिन्स वर कंटिन्यूअसली गोइंग अप, राइट? अगर आप हम्म इसके हिस्टोरिकल मार्जिन्स देखेंगे आप इसके, तो 12, 18, 21 पे थे, और इस हम्म। क्वार्टर में अराउंड 33 आया। You करेक्ट। could have started trimming here, or you could have started trimming even post this result, right? You still would have been not so worse off, right? जो रिजल्ट आने के बाद भी उसके बाद वो गिरा, उसके बाद it has not gone anywhere, because those margins are going to be very difficult to do better. हम्म So this is a nuance, right? This is something which typically a new practitioner need not preempt, right? They can focus on the results and let the results come and then take a call. But this is one of the if the margins are very high, then that is one of the red flags for you to think that should I start looking at booking my profit? Should I start looking at exiting them, right? वन ऑफ द अदर मिस्टेक्स विच पीपल मेक इज कि मार्केट करेक्शंस जब होते हैं तो ये स्टॉक्स भी गिरते हैं, राइट? इवन हम्म दो अर्निंग्स आर गुड, बट यू शुड नॉट exit these stocks during market corrections, right? हम्म Because you like I said, you have to intend to hold them till the next quarter result, because when the markets turn around, the correction जब खत्म होता है, so these are the stocks which are the first to bounce back. I have seen हम्म this across many years, across many quarters. If the earnings tailwind is there, then the हम्म first stocks to bounce back post a correction, and with the most ferocious bounce will be these earning stocks, right? हम्म तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, if you see some euphoric run जैसे शक्ति पब में आया, हम्म you can always do partial profit booking, but you have to hold on till the next quarter results. ओके। And finally, you should not confuse them with buy and hold forever candidates, right? So this हम्म is that we are playing a temporary re-rating. And like I said, हम्म जो re-rating होता है 2 से 8 क्वार्टर तक चलता है। तो हम्म ये आपको नहीं सोचना है कि मैं बस इसको लेके बैठ जाऊंगा। यू हैव टू बी एबल टू not allow it to become stale. And once any of these points come into play, you have to look at booking profits and getting into the new ideas. That is how you will be able to compound. अदरवाइज एक बार जो री-रेटिंग हो गया है, अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं तो मीन रिवर्शन विल अगेन कम इनटू प्ले, और फिर से, क्योंकि उस टाइप का अर्निंग्स मोमेंटम फॉरएवर कंटिन्यू नहीं हो सकता है। तो वी आर हम्म बेटिंग ऑन वेरी गुड और वेरी स्ट्रांग अर्निंग्स मोमेंटम। तो बाय डेफिनेशन वो फॉरएवर नहीं चल सकता, इट्स अ फेस। उस फेस को आपको कैपिटलाइज करना है, और जब वो फेस खत्म होने आता है यू हैव टू एग्जिट। ओके। सो अभी विल गो थ्रू अ फ्यू एग्जांपल्स, राइट? सो श्योर श्योर श्योर। let me take you through a few which I've listed, right? So let's start with Apar. It's one of our big winners. So look at this quarter, March 2022 quarter. Okay, the top line was just gone to the next orbit, right? It was around 2,000 crores. It went into 3,000 crores. The operating profit also, went up by 70, 80%.
So this was the breakout quarter, March 2022 का जो quarter था, right? So March 2022 का जो quarter था, which the result would have come, let's say, in April, May, right? So up around 700 or 800 rupees, you would have bought it, right? And the stock is almost a 10 bagger today, right? And how has it become a 10 bagger? That is also important to understand. ऐसा भी हो सकता था कि इस रिजल्ट के बाद वो follow through नहीं करता. So there are three things that matter for a stock to really because this particular company happened to perform consistently for multiple quarters beyond the 6 to 8 quarters range also. It is only from December 2023 do you see that वो slowdown चालू हो गया, right? So the top line growth has kind of stagnated. But what made this work, right, are three factors. One, obviously, is the earnings growth itself, right? The second is the starting valuation. The starting valuation, because Apar was, a sub 20p stock at that point in time, which started to grow at 50-60%, right? So you got that huge PE re-rating. And the third factor is, if there is a thematic tailwind, then a lot of institutional money starts chasing these stocks. So Power happened to have a thematic tailwind, which is why Apar, became a big multi-bagger. बट अभी तो ये इसका एकदम फ्लैट हो गया है अर्निंग ग्रोथ. Exactly. So फिर भी स्टॉक चल रहा है because of the third factor, because of that thematic. So अभी ये है कि there is much more, that this stock will continue to grow. So the derating will happen when the market feels that the power story is over, right? But from our strategy point of view, right? Our strategy point of view, one would have exited it around 7-8,000, because जब जैसे ये slowdown चालू हो गया, it's around maybe January, February में इसका result आया होगा. That is when you'll have to kind of exit it, right? समझिए. And get into a more new or a young earnings breakout. Fair enough. So Apar was one. What was the next one? Let's say PGEL. If you look at PGEL, I think the breakout quarter was this one, right? Where the earnings, the revenue just went through the roof, completely went into a new orbit. That is important. If it was around 400, 500, 600, I wouldn't have gotten interested. But it went into a new orbit. Even the operating profit went into a new orbit. This was March 2023. So April, May में उसका result आया होगा. So yeah, it must be somewhere here. Let's say 138, 140, right? From there to this day, it continues to give superlative earnings. To this day, it has continued that earnings growth. Right? The most recent quarter also it showed 95% top 10 growth. So we continue to kind of own it. Again, the key thing here is thematic tailwind, right? Why did I choose? The question comes, right, that कि आपको एक क्वार्टर में ऐसे मेरे ख्याल से एटलीस्ट 50 से 60 ऑप्शंस मिलेंगे, right? So how do you choose, right? Which one do you pick, right? Maybe you will in a good quarter you might get even 100 options like this, right? So how do you pick कौन सा लेना है? That is where the other two factors of valuation and thematic tailwind come into play. So this clearly was a make in India play, right? So they make all kinds of ACs and all of that. The proxy to Dixon valuations were not that stretched. So and the earnings breakout came. So this is one more example. Newgen is one more example which we picked up. ये सारे एग्जांपल्स अब वही दिखा रहे हैं जो आपने किया है. Yes, these are the examples which we kind of. एक जो एग्जांपल वो भी दिखाएगा जिसमें गलत पड़े हैं. हाँ, जो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. हाँ, इसके बाद. Yeah. So I mean it's a similar similar kind of a thing, right? So if you look at Newgen, so it was basically in this range of around 200, right? So it suddenly went into this 350 kind of a range, right? Even the operating profits went into a new range. So March 2024 में, right? So April, May में इसका result आया होगा. So it was maybe around here 1,000 rupees, and it's up about 40-50% in a couple of quarters. Right? तो इसमें अब जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखो तो मार्च क्वार्टर का ऑपरेटिंग मार्जिन इसका ऑल टाइम हाई मतलब पीक हो गया है. अगर आप इसका मार्जिन देखो 34% हो गया ना. नहीं, बट ये मार्जिन उसका पहले इस रेंज में आया है. So 30, 24, 32. That margin has come.
So it is not something इनफैक्ट ये and हर मार्च क्वार्टर में हाँ इसका मार्जिन 30% चीज होता है, क्योंकि इसका सीजनैलिटी है, सीजनलिटी। हाँ तो हाँ, दैट एस्पेक्ट ऑल्सो समझना पड़ेगा कि सीजनैलिटी अगर है तो देन यू कैन नॉट लुक एट क्वार्टर ऑन क्वार्टर समझ ग्रोथ, गया यू हैव टू लुक समझ एट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, राइट? शक्ति pumps we have already discussed. या I'll just quickly take you through Zentek. हाँ, अब उसके बाद एक गलत जिसमें पड़े वो भी हाँ दिखा देगा हाँ, ताकि। गलत मैं आपको दिखाता हूँ. Zentek was the breakout quarter. You could have this one or this one both, right? First and second quarter you could have thought of. Even if you हम्म, say it was this one, right? June 2023, जी right? Uh, so June, July, August 2023 में आया होगा. So I think the price was 23, right? So yeah, so August 20, around 800 rupees it was, right? And now it is at 1000. So it's doubled in about a year, right? So पर ये आप actually अभी the होल्ड करोगे बिकॉज इसमें अभी भी वो ग्रोथ है। हाँ, आप देखिए तो पिछले क्वार्टर में इसमें 20% ग्रोथ हुआ है। हाँ, इसमें क्या हो रहा है ना, द थर्ड एंगल ऑफ इट, द थीमेटिक एंगल थोड़ा वीकन हो रहा है क्योंकि डिफेंस हैज काइंड ऑफ प्लेड आउट, इट इज नो लॉन्गर अ फ्रेश थीम, इट इज अ अच्छा स्टेल थीम. और अच्छा, वैल्यूएशंस तो मैंने बोला ना कि एक अर्निंग्स है, एक वैल्यूएशन है और एक थीमेटिक टेलविंड है, जी तो ये तीन तीन पहिए हैं इसके. तो जी you have to evaluate on all of these three. So जी although we continue to hold it because the defense we feel is a much longer story. But for the time being, from a price action point of view, we expect it to consolidate. क्योंकि इसका री रेटिंग एक बार हो गया, जैसे मैंने बोला कि मार्केट, हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर सोचते हैं, बट मार्केट को अगर पता चल गया कि इसमें टेलविंड है, मार्केट विल बी 2-3 क्वार्टर्स अहेड ऑफ अस. जी So you have to get that into play. One, let me give you a few examples जहाँ पे काम नहीं करा. जी। काबरा was one, I think. और आपने कैसे बेचा उसको जब काम नहीं किया था? नहीं, नेक्स्ट क्वार्टर में आई गिव इट एट द मैक्स 2 quarters. अच्छा अच्छा अच्छा, सो आई थिंक काबरा, काबरा वाला में आया था ये आपके। आई थिंक इट वाज हाँ दिस रिजल्ट, हाँ, आई थिंक इट वाज दिस दिसंबर रिजल्ट. क्वार्टर, हाँ, दिसंबर where I, 22। yeah, yeah, December buys is when we kind of got into it. Okay, and it was okay for one more quarter. Okay, but then that momentum kind of so it did an operating profit which was like half of what it did in the last 2 quarters. अच्छा, So, so that it did not continue and we had to exit. The other example, or if I can give you, तो ये एग्जिट कब किए थे? June में. So जून में? let's say I bought तो it सेम in भाव में this. एग्जिट हो गया था मोरलेस? नहीं नहीं, I think there was some loss there. Let me see. Okay. अच्छा, December. तो कितने December. कितने स्टॉक्स में कितनों में लॉस बुक होता है, कितने हाँ, प्रॉफिट देते हैं, क्या yeah, I'll सक्सेस have that. परसेंटेज? So I have that number. So basically, like I said, right, on an average, the hit rate is 60-70%. ओके Right? When I say hit rate, it just means that 60-70% of the stocks are profitable, right? जी, And maybe 30% of the stocks don't work. In ठीक a है, very good phase, like I said, the hit rate can be 90% also. And in a bearish phase, the hit rate can be below 50% also. So that is a function of the market environment, but on an average 60%. और ओके जो वर्क करता है, right, on an average you get anywhere between 40 to 50% upside, and what doesn't work, on an average you can get out at about 15% downside. So like there's ओके, a 1:3 kind of a risk reward in an average case, right? So some stocks we may be able to exit at break even, some stocks we may be able to exit at 20-25% loss also. But on an average, wherever it doesn't work out, you can get out at about 10-15% loss. And when you are right, on an average, you can make about 50%. करेक्ट, लवली, इट वाज गुड एक्सरसाइज आई थिंक। मैंने ना फ्रैंकली स्पीकिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करके कई बार स्ट्रेटजीज बनाई है, ट्रेड भी किया है, बट आई थिंक आपने इतना ऑब्जेक्टिफाई कर रखा है कि शायद मतलब इन पर्सन कोई भी जजमेंट ही नहीं है इसके अंदर में। इट्स सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, आपने इक्वेशन में डाल दिया इसको। वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव, एंड प्लीज अलाउ मी टू बोरो सम ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स फॉर माई इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। रियली गुड। Thank you so much for having me. Thank you, Prabhakar, for this beautiful face-to-face, and I'm sure that your investors or people who have been entrusting you with their money, उनको
वैल्यू दिख रहा होगा और भी लोग आपसे जुड़ेंगे। जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव, आई हैव नो कमर्शियल इंटरेस्ट, बट हाँ, आपका कोऑर्डिनेट्स मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा फॉर पीपल टू कनेक्ट विथ यू, आस्क यू मोर क्वेश्चंस, और आपके पास समय हो तो रिप्लाई जरूर कीजिएगा। थैंक यू। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। बाय। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.